আছিলে চেয়াৰমেন আৰু যিজনে মাতৃভাষাৰ কোৱাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল বাইদেউ মোৰ মনত পৰিছে মটিভেট কৰিছিলে আৰু নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা মই দ্য লোন অপজিশ্যন ভইচ I don't think he had given a previous request. Had you given a previous request for translation in Assamese? Bola tha? So would you like to then come little later and then we can take you up once the translation? I informed them. Okay. So right now the translation is not here. Do you want to do it little later so that we can arrange the translation? We can continue without translation if you allow. As you like. Okay. Shall I continue? Sure, please continue. Please continue. If no one has an objection, we can continue. Translate kar le. Sure. तो लाइव जा रहा है. Shall I continue? Yes. लाइव वीडियो शेयर कर रहा कौन? তেখেতে নৰ্থ ইষ্টৰ ডনিয়াৰ মিনিষ্ট্ৰীৰ ওপৰত স্পেচিয়েল ডিছকাশ্যন এলাউ কৰিছিলে আৰু তাত মই অংশগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ. ডেট ৱাজ এ ভেৰি গুড ডিবেট আৰু সেই ক্ষেত্ৰত মোৰ সন্মানীয় জয়ৰাম ৰমেশ ডাঙৰীয়াই মোক সহায় কৰিছিলে আৰু তেখেতে গাইড কৰিছিলে আৰু কংগ্ৰেছৰ পৰা মোক কিছু সময় দিছিলে. আজি 3 মিনিটৰ সাংসদ হিচাপে এজ প্ৰিয়ংকাজি হেজ told কি আমি 3 মিনিটৰ সাংসদ আছিলোঁ. 3 মিনিটতো আমি সকলো কথা we tried to raise our issues only in 3-4 minutes. কিন্তু আজি হয়তো আমাৰ তেনেকুৱা বাধা নাই. Today we are very emotional কাৰণ আমি ইয়াৰ পৰা গুচি যাম আৰু কোনোবাই কৈছে যে এক্স এমপিৰ এটা বস্তু থাকি যায় সেইটো হ'ল এক্স এমপিৰ পৰা এইটো বস্তু কোনো নিব নোৱাৰে. আৰু যদিও আজি জাভেদ আলী খান আৰু সঞ্জয় সিঙে যিখিনি ছাজেশ্যন দিছে এইখিনি মই ইমপ্লিমেণ্ট হোৱাটো আশা কৰিছোঁ. আৰু মই সাংসদ হোৱাৰ আগতে এই পলিটিক্সলৈ অহাৰ আগতে মই এজন সাংবাদিক আছিলোঁ আৰু জীৱনৰ বহুত সময় মই সাংবাদিকতা কৰিছোঁ. মই ৰিপৰ্টাৰ আছিলোঁ, এডিটৰ আছিলোঁ, both in print media and television media. আৰু মই প্ৰায় more than 45 years I was in journalism. তাৰপিছত in a very peculiar situation এটা বৰ আজিকালি অৱশ্যে ক'বলৈ বেয়া লাগে সেই জাৰ্নেলিজিম নাই আমি যিটো কৰি আহিছিলোঁ. এতিয়া সেইকাৰণে সেই সময়ত এটা ছাডেনলি মই বিৰোধীৰ সন্মিলিত অপজিশ্যনৰ এগৰাকী সদস্য হিচাপে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট সদস্য হিচাপে ইয়াত মই প্ৰৱেশ কৰিলোঁ. মই এজন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট আৰু উইথ দি ছাপৰ্ট অফ কংগ্ৰেছ এণ্ড আদাৰ অপজিশ্যন পলিটিকেল পাৰ্টিজ দ'জ হু আৰ অপ'জ টু বিজেপি. এতিয়া মই মনত পৰিছে মোৰ সাংবাদিকতাৰ মই যিটো সততা যিটো অনেষ্টি আৰু মই যিটো কুৱেশ্যন আমাৰ চৰকাৰক যিটো প্ৰশ্ন কৰাৰ কথা থাকে অধিকাৰ সেইটো প্ৰয়োগ কৰিছিলোঁ. আৰু তাৰ কাৰণে মই কাম কৰা চাৰ্কুলেশ্যন পেপাৰৰ চাৰ্কুলেশ্যন আৰু টেলিভিশ্যনৰ যথেষ্ট জনপ্ৰিয়তা হৈছিলে আৰু চৰকাৰে কনজিকিউটিভ গভৰ্ণমেণ্টে মোৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰিছিলে আৰু মোক তেওঁলোকে জেলত সোমোৱাইছিলে. সেইবোৰ কথা মই ক'বলৈ আজি নাযাওঁ. কিন্তু মই এইটো কৈছোঁ যে ফ্ৰম 4th ষ্টেট টু পাৰ্লিয়ামেণ্ট সেইকাৰণে মই কথাটো উল্লেখ কৰিছোঁ যে পিলাৰ অফ ডেমক্ৰেচি বুলি যি 4টা কথা কোৱা হয় তাত এটাত মই আছিলোঁ জাৰ্নেলিজিমত. তাৰপিছত ছেকেণ্ড মই আহিছোঁ পাৰ্লিয়ামেণ্টত. ইয়াত 6 বছৰ মোৰ কি অভিজ্ঞতা হ'ল সেই কথা মই খুব সবিশেষ ক'বলৈ নাযাওঁ. কিন্তু এটা যে ডাঙৰ অভিজ্ঞতা হ'ল নতুন অভিজ্ঞতা হ'ল আৰু যিটোৱে মোক সমৃদ্ধ কৰিলে সেই কথাটো মই নিশ্চয় আজি উল্লেখ কৰিব লাগিব. আৰু মই এই সংসদত প্ৰৱেশ কৰাৰ পিছত মই একো ভাবিব পৰা নাই যে মই কোনফালে যাম কি কৰিম. আৰু সেই সময়তে মোক জয়ৰাম ৰমেশ ডাঙৰীয়া, মনোজ কুমাৰ ঝা আৰু আজি বহুদিন ধৰি মোৰ কাষতে বহি থকা জাভেদ আলী খান এওঁলোকে জন বুটাছ, মুকুল ৱাছনিক, দিগ্বিজয় সিং ডাঙৰীয়া আৰু বহুতে মোক বিভিন্ন সময়ত সহায় কৰিছে. আৰু এখেতসকলৰ বক্তৃতা শুনিবৰ কাৰণে মই সদায় খুব
অপেক্ষা কৰিছিলোঁ, কাৰণ মই সকলোৰে পৰা অলপ অলপ শিকাৰ যত্ন কৰিছিলোঁ। মই এজন ভাল পাৰ্লিমেণ্টেৰিয়ান হ'ব নোৱাৰিলোঁ। 6 বছৰত কোনোবা এজন ভাল পাৰ্লিমেণ্টেৰিয়ান হ'ব পৰাকৈ মোৰ যি যোগ্যতা এইটো নাই। কিন্তু মই যিসকলে ভাল ভাষণ দিয়ে, যিসকলে খুব ভালকৈ কয়, মোৰ সন্মুখত বহি আছে প্ৰিয়ংকা চতুৰ্বেদী, সাকেত, এইসকলৰ বক্তৃতা মই খুব আনন্দৰে শুনিছিলোঁ আৰু খুব আগ্ৰহেৰে শুনিছিলোঁ। আৰু আপোনাৰ কথা আপুনি চেয়াৰত বহি আছে, আপুনি প্ৰথম আজি মোৰ কথা উল্লেখ কৰিলে, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আপোনাৰ যি জ্ঞান, আপোনাৰ যিটো প্ৰেজেণ্টেশ্যন, এইটো কথাই মোক সদায় মুগ্ধ কৰিছিলে। গতিকে মই 3গৰাকী চেয়াৰমেনক পালোঁ। বৰ্তমানৰ গৰাকীক মই হয়তো বৰ বেছিদিন পোৱা নাই, নাপালোঁ, কিন্তু হ'লেও তেখেতৰ যি ব্যক্তিত্ব, সেই ব্যক্তিত্বই মোক যথেষ্ট আকৃষ্ট কৰিছিলে। আৰু সংসদৰ এগৰাকী সাংসদ হিচাপে মোৰ যি অভিজ্ঞতা হ'ল, সেইটো এটা ৰিমাৰ্কেবল এক্সপেৰিয়েঞ্চ। ইয়াত মই লিডাৰ, স্কলাৰ্ছ, এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ্ছ, এক্সপাৰ্টছ ফ্ৰম ডিফাৰেণ্ট ফিল্ডছ এইসকলক লগ পালোঁ আৰু শুনিলোঁ। আৰু এইটোৱে মোৰ ওৱান অফ দি গ্ৰেটেষ্ট প্ৰিভিলেজ অফ মাই পাব্লিক লাইফ। তাৰপিছত মই জাৰ্নেলিজিমৰ কথা আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যে my years as an editor taught me certain values: questioning authority, defending truth, and respecting the intelligence of the people. আৰু যি কাৰণে মই কৈছোঁ যে মই চৰকাৰৰ প্ৰশ্ন কৰাৰ কাৰণে, প্ৰতিবাদ কৰাৰ কাৰণে, আৰু মই এজন পাব্লিক এক্টিভিষ্টো আছিলোঁ। ইয়াতো মই সংসদৰ ভিতৰতো আছে প্ৰতিবাদ, বাহিৰতো মই যিমানবিলাক প্ৰতিবাদ হৈছোঁ, যিটো কথা আমাৰ CPMৰ শিৱদৰ্শনে উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত মই অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ। গতিকে মই চেষ্টা কৰিছোঁ, অন্ততঃ চেষ্টা কৰাৰ কাৰণে সকলোৱে মোক মনত ৰাখিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। মই খুব ভাল পাৰ্লিমেণ্টেৰিয়ান নহয়। 6 বছৰত মই কিমান শিকিলোঁ, কিমান পাৰিলোঁ, মই বিচাৰ কৰাৰ মোৰ যোগ্যতা নাই। কিন্তু যিসকলে মোক সহায় কৰিলে, যিসকলে মোক গাইড কৰিলে, তেখেতসকলক মই এই সুযোগতে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু মই ইয়াতো ঠিক মই সাংবাদিকতা কৰাৰ দৰেই মই ইয়াতো যথেষ্ট প্ৰশ্ন কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। আৰু 3 মিনিট 4 মিনিটত মই মোৰ নৰ্থ ইষ্টৰ নেগলেক্টেড অসমৰ মই বহুত কথা ইয়াত বিভিন্ন ইছ্যুজ পাৰ্টেনিং টু দ্য ষ্টেট মই ইয়াত উত্থাপন কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। কি কৰিব পাৰিলোঁ মই নাজানো, কিন্তু মানুহে ছ'চিয়েল মিডিয়া, আজিকালি হোৱাটছআপ ইউনিভাৰ্চিটিৰ যুগত মিডিয়া চেলত আমাৰ বিৰুদ্ধে বহুত সমালোচনা হয়, কেম্পেইন হয়, কিন্তু তাৰ মাজত আমি আমাৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছোঁ। আৰু মই আজি ইয়াৰ পৰা বিদায় ল'বৰ সময়ত নিশ্চয় খুব কষ্ট পাইছোঁ, দুখ পাইছোঁ, কাৰণ কম সময়ৰ ভিতৰত আমি এটা ফেমিলিৰ দৰে ইয়াত থাকিব পাৰিছিলোঁ। মই যেতিয়া ডনিয়াৰ ওপৰত বক্তৃতা দিছিলোঁ, তেতিয়া ৰুলিং পাৰ্টিৰ তৰফৰ পৰা বহুত সদস্যই মোক ধন্যবাদ জনাইছিলে, এপ্ৰিচিয়েট কৰিছিলে, যিটো কথা মই কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰিম। গতিকে মই খুব বেছি নকওঁ, এইটোৱে ক'ম যে নতুন যিটো জেনেৰেশ্যন আহিছে, মই পেছিমিষ্ট নহয়, আই এম নট এ পেছিমিষ্ট। দ্য ফিউচাৰ অফ আৱাৰ ডেম'ক্ৰেচি উইল বি শেপড বাই নিউ আইডিয়াজ, নিউ এনাৰ্জি এণ্ড নিউ লিডাৰশ্বিপ। আই এম অপটিমিষ্টিক এবাউট ডেট, যে তেওঁলোকৰ নেতৃত্বত ভাৰতবৰ্ষৰ গণতন্ত্ৰ আৰু আগবাঢ়ি যাব। বহুত বাধা বিঘিনিৰ মাজতো আজিও ভাৰতবৰ্ষৰ গণতন্ত্ৰ জীয়াই আছে, ইয়াক আমি জীয়াই ৰাখিব লাগিব। শেষত মই ক'ম যে as I deliver my last speech to this house, I live with gratitude for the opportunity to serve, for the friendship across party lines, and for the privilege of being part of this great democratic institution. From the newsroom to parliament, my journey has strengthened one belief, that India's democracy will continue to grow stronger with each generation. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Shriman Ayodhya Rami Reddy Allaji. Thank you, Honorable Vice Chairman, sir. As I come to the close of my tenure in the Rajya Sabha, I rise today with a deep sense of gratitude
to serve in this August House is a privilege that very few receive, and I will always value the opportunity to have contributed to the work of Parliament and to the strength of our democracy and our nation. Sir, at this point, I wanted to thank my grandmother who gave me the clear values and vision to serve my country, and also my father and mother who always encouraged me that before you get into social life, political life, you must make yourself a highly disciplined personal and professional life. Having achieved those things, then only you must step in and you should work as a role model so that, this country, always country is first, समाज उसके बाद, and then उसके बाद ही आप और आपका जो भी विचार. तो वो जो भावना से हमको ये हाउस में भेजा गया था, तो उसके लिए I wanted to thank my parents and grandparents and also thank my family. Sir, also I wanted to thank my party leader, Mr. Jagan Mohan Reddy, who from YSR Congress party has sent me to this August House. He has placed trust in me, and I am equally grateful to the people and institutions that support me through this journey. Sir, this house has given me a platform to speak not only for my state, but also for the larger national interest. Over these years, I have tried to approach every issue with sincerity, focusing on development, welfare, and ensuring that the voice of ordinary citizens of this nation finds space in national policy. Sir, what I wanted to say is that this house, a great house, this country, I believe, has a great future. For a great country to get into that great future, there is some goal and direction given by the Honorable Prime Minister. If we have to be a Viksit Bharat, a developed nation, where the quality of life of every citizen of this country and also the entire nature of this country to be the best in the world, we are anyhow seeing that we will be the third largest economy, but we should look at becoming the best environmentally conscious and sensitive nation and society. If we can build that, no one in this world can compete with us. So I want the nation to focus not alone economically, but also on environmental consciousness, to see that all the people and all the ecosystem around us also equally goes up. For that, we have to bring in right kind of policies. For that, this honorable house, this house we have to have clear deliverables for next 25 years. How we have to strategize to run this house, how we have to structure our way of working, and also the deliverables around all the stakeholders of this house, starting from this chair to every member of this house, the clear deliverables that need to be properly written down, because we have a very big goal to achieve. For that, highest level of discipline, hard working, a proper responsible areas for each one of us, and then how we have to achieve those responsibilities as each and every parliamentarian. And are we doing that rightfully? Not alone this house, but also every political party, they need to look at. They also need to provide the deliverables to every parliamentarian. And they have to review them
and also has to audit. And also audit findings of every individual and every political party must come back and to be shown. And then with that sort of a mindset and with sort of a outcome, I think the entire house will be made accountable, not just for themselves, for their party, but for the nation, for which the foundation our elders have already laid. Past was fantastic. But present day, how are we making it to see that our future children are happily survived and sustained a happy life? So for that, sir, I think this current generation, current platform, of this house need to really re-strategize our vision plans and also deliverable plans, with which actually I want the effectiveness of working of this house must increase. People have to be, I see, attendance must go up. The house should work for more hours. And we should have offline lot of committee meetings. I'm also seeing the committee meetings importance has to really go up. People have to be prepared, ready to get into the committees with valuable questions and also give directions to the committee so that those mini parliaments come and help and support this parliament so that, the effectiveness of all the stakeholders really go up. I sincerely want that if we have to become the developed nation, I think the house and the people of this house must really revisit their working and also their deliverables must be rewritten. Sir, I will carry with me most is the culture of the Rajya Sabha, the debate and the dignity with which this house is conducted, differences without bitterness and an emphasis on reason. Many members here may belong to different political streams, but we are united by a shared duty to uphold the Constitution and strengthen the institutions. I see that is the character I have seen in this house. I have learned from colleagues across party lines, and I acknowledge the courtesy and cooperation extended to me during my term. Sir, I also place on record my appreciations and thanks to the chair and also to the honorable chairman, deputy chairman, sir, panel chairmen, and all the floor leaders and senior colleagues from whom I have learnt a lot. The officers and staff of the Secretariat who work tirelessly to ensure that the house functions smoothly and efficiently. I saw a lot of professionalism and fairness among all the people that are working here. Sir, as I step down, I do so with humility, not as an end, but as a transition. Public service continues beyond any one office. I will remain committed to serving my people and contributing whatever I can, guided by the values of integrity, discipline, commitment, hard work, and respect for democratic institutions. I wish to see our country achieve Viksit Bharat, and I am happy to be part of this journey. Thank you. Thank you once again. Namaskar, sir. Thank you, sir. Honorable Shriman G.K. Vasan ji will speak in Tamil. Thank you, sir, for giving me an opportunity to speak in Tamil. அனைவருக்கும் வணக்கம். பாராளுமன்ற மேலவையிலே என்னுடைய மூன்றாவது முறை 2020-26 இந்த அவைக்கு வருவதற்கான வாய்ப்பை அளித்த அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தினுடைய தலைமைக்கும் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தலைமைக்கும் என்னுடைய நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ராஜ்யசபையை பொறுத்தவரையில் இது என்னுடைய 18வது வருடம். ஒவ்வொரு வருடமும் இந்த அவையிலே ஒவ்வொரு முறையும் ஒரு பாடம், இது ஒரு கல்விச்சாலை,
ஒரு யூனிவர்சிட்டி, பல்கலைக்கழகம். இங்கே உறுப்பினராக இருப்பவர்களெல்லாம் பல்துறையை சார்ந்த மரியாதைக்குரியவர்கள். ஒவ்வொருவர் கூறும் கருத்தும் ஒவ்வொரு முறையும் ஒரு பாடமாக நமக்கு இருக்கும் என்பதை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். என்னுடைய கட்சி தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் மூப்பனார் பெயரிலே நான் தமிழக மக்களுடைய எண்ணங்களை இந்த அவையிலே பிரதிபலித்திருக்கிறேன் என்ற மகிழ்ச்சி எனக்கு இருக்கிறது. அதே போல என்னுடைய கட்சியின் சார்பிலே இந்தியாவினுடைய பொருளாதார உயர்வு, இந்தியாவினுடைய பாதுகாப்புக்கு இந்த அவையிலே நான் குரல் கொடுத்திருக்கிறேன் என்று பெருமையோடு குறிப்பிட விரும்புகிறேன். இந்த அவையை பொறுத்தவரையிலே ஆளும் கட்சி, எதிர்கட்சி, மரியாதைக்குரிய மூத்த தலைவர்கள், உறுப்பினர்கள் மற்றும் இந்த அவையை நடத்தும் ராஜ்யசபை செக்ரட்டேரியட் நிர்வாகிகள் எனக்கு கொடுத்த ஒத்துழைப்புக்கு இந்த நேரத்திலே நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மிக முக்கியமாக காஷ்மீரிலிருந்து கன்னியாகுமரி வரை இங்கே ஜாதி, மதம், மொழி, இனம் இவைகளுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டு நம்முடைய ராஜ்யசபை உறுப்பினர்கள் எல்லாம் ஒவ்வொருவரும் அன்போடு பண்போடு பழகிக் கொள்கிறார்கள். உற்றார் உறவினர்கள், நண்பர்கள், நலன் விரும்பிகள், சகோதர சகோதரிகளாக இங்கே அவர்கள் பழகுவது மிகுந்த மனநிறைவை தருகிறது, மகிழ்ச்சியை தருகிறது. சபையின் காலம் முடிந்த பிறகு கூட ஒவ்வொருவருக்கும் தொடர்பு பல வருடங்கள் இருப்பது நமக்கெல்லாம் பெருமை சேர்க்கிறது. மேலும் குறிப்பாக இந்த அவையினுடைய மரியாதைக்குரிய தலைவர் சேர்மன் ஐயா சிபி ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் நடுநிலையான செயல்பாட்டுக்கு குறித்த காலத்திலேயே எடுத்துக்காட்டாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். தனது கடின உழைப்பு, அர்ப்பணிப்பு உணர்வின் காரணமாக இந்த உயர்ந்த ஸ்தானத்திலே இன்று அவர்கள் அமர்ந்து தமிழகத்திலிருந்து இந்தியாவுக்கு பெருமை சேர்க்கின்ற இந்த நேரத்திலே நானும் உறுப்பினராக அவர்களோடு பணியாற்றியதை மன நிறைவோடு நினைத்து பார்த்து மீண்டும் அவையில் உள்ள அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன். வணக்கம். Thank you. Dr. Fauzia Khanji. Thank you, sir. Sir, I wish to express my profound sentiments of gratefulness to this august house where I was given the opportunity to serve by nation by my leader, Honorable Sharad Pawarji, along with the Congress and the Shiv Sena UBT from Maharashtra. I have had the opportunity to learn from all the learned members of this house. I shall be leaving much enriched from their wisdom and experience. I have been inspired by the intellectual acumen of many honorable members. Our leader of opposition, Mallikarjun Kharge ji, Jairam Ramesh ji, Pramod Tiwari ji, stalwarts like Kapil Sibbal ji, Abhishek Manu Singhvi ji, P. Chidambaram ji, Tiruchi Shiva ji, you sir, Dr. Sashmit Patra, Ghansham Tiwari ji, Sudhanshu Trivedi ji, Sudha Murthy ma'am, she's been speaking so well in this house, Sanjay Singh ji, Professor Manoj Jha, John Brittas, and all the wonderful women members of the house, my fellow members, my courageous women of this house. I thank you, sir. As a speaker, I want to thank our chairperson. I want to thank the earlier chairpersons, Venkaiah Naidu ji, Dhankar ji. They have always had a word of praise for me. They, Harivansh Rai ji, and sir, the leader of the house, Nadda ji, all the administrative staff, the marshals, the attendants, the security personnel, everybody. Sir, I have learned a lot from different political parties, particularly in the parliament,
besides my own. I have learnt ideology and social justice from the Congress, vision, planning and commitment from the BJP, aggression and unity from the TMC, decency and diligence from the DMK, integrity for their leader from the BJD, loyalty to their state from the communist parties, sobriety from the RJD. So all the parties together have enriched our way of thinking. Sir, as about Sharad Pawarji, what should I say? Sir, he has been an icon of women's empowerment. I was working as an educationist in a small town where I had some educational institutions. I was running them, and I had no political background. Sharad Pawarji picked me up from there.